Electromagnetic blood flow meter, it measures instantaneous pulse style flow of blood. Instantaneous means instant flow of the blood. Because of that, it is more useful, and it works based on the principle of electromagnetic induction. The basic physics of this principle can be traced by the English physicist Michael Faraday. In 1831, discovers that the electrical current can be generated with the magnetic field. So here we can see a magnetic field is generated by the permanent magnet north pole and south pole. In between, a moving conductor is placed so that the electromagnetic induction or induced field is generated in the moving conductor, so that the induced voltage is generated in the conductor. It is the basic principle of the electromagnetic blood flow meters. Conductive blood is the moving conductor, and moving conductor is given, but in real condition, flowing blood is there. After applying the magnetic field, the in blood electrons are separated. Here, a permanent magnet or electromagnetic positioned around the blood vessel generates a magnetic field perpendicular to the direction of the flow of the blood, and voltage induced in the moving blood column is measured with the stationary electrodes located on opposite sides of the blood vessel and perpendicular to the direction of the magnetic field. Here we can see in this figure, if we apply in this direction of the magnetic field, then the electrodes are perpendicular. Then here we can see the electrodes, anode and cathode electrodes are attached with the blood flow vessel. Two electrodes which can pick up electrical voltages are installed at the right angle of the wall of the tube. This is the wall of the tube, and it pick up the voltage after generating the magnetic field. And the induced EMF is the, we can say, the E equal to induced EMF equal to integration of the 0 to L1 length of the conductor, and U into B into dl. Here U is the velocity, instantaneous velocity of the blood in meter per second, and L is the length between electrodes in meter, and B is the magnetic flux density in Tesla. So this is the equation of the EMF. This method requires that the blood vessel be exposed so that the flow head or the measuring probe can be put across it. And design of the flow transducers. The electromagnetic flow transducer is a tube of non-magnetic material to ensure that the magnetic flux does not bypass the flowing liquid and go into the walls of the tube. The tube is made of a conducting material and generally has an insulating lining to prevent short circuiting of the induced EMF. In this figure, we can see the in this coil we can generate the north pole and south pole, and it behaves as the magnet, so that if we placed a conducting or a flowing tube in these two north pole and south pole, then the induced EMF is generated in this flow meter. In this magnetic field and flow of tube, a line is kept so that the short circuit is not happen. The induced EMF is picked up by point electrodes made from a stainless steel or platinum. The flow head contains a slot through which the intact blood vessel can be inserted to make a snug fit. Several probes of different sizes must therefore accompany the flow meter to match the full range of sizes of the blood vessels, which have various diameters. Flow heads having as small as 1 mm are available. Here the advantage of the electromagnetic flow meter. The electromagnetic flow meter provides rapid response to flow charges. It provides linear wide range, and measuring range setting can be optimized. It has ability to measure reverse flow. No additional pressure drops. No obstruction is created to flow. It is mainly suitable for hydraulic solid transport.
It is unaffected by changes in temperature, density, velocity, concentration, and electrical conductivity. By these component, it is not affected. And disadvantage of the electromagnetic, it is not suitable for low velocity. It is more expensive. It is suitable for fluids having conductivity greater than 20 micro ohm per centimeter. Gas inclusion cause errors. These are all about the electromagnetic blood flow meters. Thank you. Anybody has asked any question? Yes. इस इंस्ट्रूमेंट हेलो। को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्लड फ्लो मीटर्स को हाँ, हम लोग ब्रीफली अगर 2-4 लाइन में बोलना चाहें समझने के लिए। कोई भी कंडक्टिंग कॉइल को या कोई भी कंडक्टिंग कंडक्टर को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव कराते हैं तो उसमें क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। तो उसी तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम फ्लोइंग ब्लड को अगर पाइप से फ्लो कर रहे हैं या नस से अगर वेन से अगर ब्लड फ्लो कर रहा है, उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखेंगे तो क्या होगा, उसमें भी, क्योंकि वो जो ब्लड है वो कंडक्टिंग इन नेचर होता है, जैसे कि कंडक्टर हो गया, वो कंडक्टिंग इन नेचर होगा। कोई भी मटेरियल होगा जो कि फ्लोइंग इन नेचर में होगा, अगर वो कंडक्टिंग नहीं होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। अगर वो कंडक्टिंग इन नेचर होगा, कंडक्टिव बिहेवियर शो करता है, तभी वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करेगा, तभी ये अप्लाई होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला जो भी है मेजरमेंट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक फ्लोइंग वाला जो ब्लड वेसल है यहाँ पर रखते हैं और दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इसके चलते इसमें जो होता है कि ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ब्लड फ्लो करने से इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के बाद इसमें क्या होता है कि वोल्टेज जनरेट, इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है। तो इंड्यूस्ड वोल्टेज के चलते यहाँ पर क्या होता है कि दो इलेक्ट्रोड लगाया जाता है जो कि वोल्टेज को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, तो इसमें जो वोल्टेज जनरेट हुआ वो इसके मतलब इसके थ्रू हम वोल्ट मीटर लगा के हम मेजर कर सकते हैं कि कितना वोल्ट जनरेट हुआ। तो वो वोल्टेज जनरेट होने के बाद हम क्या करते हैं कि इसका वेलोसिटी जो है फ्लो मीटर का, जो भी मतलब ब्लड का वेलोसिटी है, उससे और इसका रिलेशन जो है वो दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं और हम ब्लड का फ्लो मेजर कर लेते हैं यहाँ से। जैसे कि पहले मेजर किए कि कितना हमको वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ, और उसके बाद इंड्यूस्ड होने के बाद फिर उसको ब्लड का हमको एक क्रॉस सेक्शन पता होगा कितना है, और इसका क्रॉस सेक्शन पता होने के चलते उसका फ्लो का जो वेलोसिटी है वो भी हम जान रहे हैं। तो वहाँ से दोनों का इक्वेशन लेकर के और ये हम मतलब निकाल सकते हैं। But it's okay that how you assume this blood as the flowing conductor? ब्लड एज ए फ्लोइंग कंडक्टर, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड है, ब्लड तो फ्लो कर रहा है तो उसका भी एक वेलोसिटी होगा। और You are not Hello? audible. Hello? यू आर नॉट ऑडिबल। इसका कोई साइड इफेक्ट है बॉडी पे? साइड इफेक्ट तो नहीं है, कुछ भी नहीं। So the blood is considered as the conductor. So under this electromagnetic effect, there is no side effects. There are no side effects which we are facing right now. तो ये यहाँ पर कंडक्टर की तरह कोई भी मटेरियल, मतलब कंडक्टर जो है, कंडक्टर में भी इलेक्ट्रॉन होता है जो कि जिसके चलते ही मेरा मतलब जो करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के चलते। तो उसी तरह ब्लड में भी इलेक्ट्रॉन होता है। Blood, yes. हाँ। That can be considered as the electron present is everywhere, and if we flow anything between the magnets, then it can नहीं, produce. पहले हम बोले हैं पहले कि ये जो अप्लाई होता है जो कंडक्टिंग मटेरियल के लिए ही यूज होता है, मतलब जो कि कंडक्टिंग इन नेचर का हो। विदाउट कंडक्टिंग नेचर इट इज नॉट अप्लाइड। वाटर काम करेगा? हाँ, वाटर काम करेगा, वाटर में भी अप्लाई कर सकते हैं, वायल में भी अप्लाई कर सकते हैं। एल्कलाइन वाटर तो करेगा अच्छे से? हाँ, वो सब करेगा, अच्छा, लेकिन Vinayak, स्टील जो वाटर होता है उसमें। हाँ, हेलो। since there is some
corollary is prevailing all around the social media that the 5G towers is being tested, and while testing, some people are facing some headaches, and some metallic windows or doors also conduct some electricity, and few people also get some shocks from these doors and metallic doors and windows due to the 5G testing. And this is a kind of electromagnetic thing, as you know well. So there might be some uh, adverse effect of this electromagnetism while blood is flowing through this, and blood also get electrocuted, like these metallic windows is affected by the 5G tower testing. How can you justify this thing? Corona मतलब second wave or third wave is coming, that is directly or indirectly is linked with getting linked with 5G connections or their हाँ testing. नहीं बोल रहा है कि मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट जो है वो तो Yeah, मतलब ह्यूमन पर आता है, लेकिन जैसे कि यहाँ पर भी आ सकता है, लेकिन डायरेक्ट अगर मेजर करेंगे, अगर कोई भेन में ब्लड फ्लो कर रहा है तो उसमें अगर लगा के अगर करते हैं तब हो सकता है, लेकिन ये जो है वो कोई ट्यूब के थ्रू भेजा जाता है, विकास बोलो। इस टाइप से कुछ like radiations have direct or indirect effect on birds, so it may have effect on humans also. इंटरफेरेंस तो हर जगह होता है, इंटरफेरेंस तो है. Induced voltage is generated in the conductor, so it is the basic principle of the electromagnetic and blood flow meters.